Today we will see components of Earth magnetic field. As we all know, Earth itself has a magnetic field. Gilbert was the first scientist to propose that Earth is a huge magnet. So Earth should have a magnetic field. There are many evidences of it. If we suspend a needle, compass needle, it aligns itself towards the north-south direction. No? Apart from that, sailors and navigators used the compass needle or the magnetic compass to find the direction. So there is early evidence that if there is a magnetic field around the earth, then only the magnetic needle is going to incline itself towards a certain position, है ना. So earth have a magnetic field, तभी जो needle है वो अपने आप को एक certain direction पे incline कर रही है, और वो डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना. अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं उसको, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली कहाँ की ओर आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता था. सो कैसे इसको अब इंपोर्टेंस क्या हमारे मैग्नेटिक फील्ड की और रीजन क्या है हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का. तो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर बाय दीज एक्सपेरिमेंट्स और द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड दैट sailors use the magnetic compass needle. Apart from that, migratory birds, the magnetic field of earth provides a direction for the migratory birds to fly and to reach their destination. Apart from that, it also helps us from the radiation from the sun, है ना. Sun, which is a source of all kind of radiations, है ना. Sun not only emit light. Light is what we see, है ना. Light is only the is made up of the 7 different wavelengths or frequencies that we see. But there is a huge spectrum of radiation apart from the charged particles that sun emit, है ना. So it also helps us to protect those the very high energy charged particles that are coming into the Earth atmosphere, है ना. So magnetic field is also providing a shield, है ना, from the charged particles that are coming continuously from the sun. Apart from that, they have migratory birds, है ना, and they have helped during the navigation, during the history of, ठीक है. So apart from that, what is the cause of this earth magnetic field? As we know that our earth is basically divided. The inner part, our earth has 3 layers, and the layers of earth is divided into crust, mantle and core. So the outermost is crust, in which we are standing, okay. Apart from that, there is mantle and core, and the core is the innermost part of the earth. This innermost part is made up of iron and nickel, and these iron and nickel are charged particles. They are in liquid form at very high temperature, and their charged particle, these are charged particles, and their motion due to the rotation and revolution of earth around sun causes current, है ना. because when charged particle move, that is current. Motion of charged particle gives current, है ना. Motion of charged particle gives current, and current, we know current gives us magnetic field. So charged particles are provided by the nickel and iron, and they are charged particles at the core of earth, and they start moving due to rotation and revolution of the earth. So this motion provides the current, and the current provides the necessary magnetic field of the earth. This is the magnetic field of the earth. Now there are many other theories that suggest that the ionosphere is a layer of earth's atmosphere, and these have ions also. They are quite responsible, but the most suggested evidence is this only, ठीक है, which is like the most strong evidence we can say for earth magnetic field. Apart from that, if we see the earth magnetic field, now the components of earth magnetic field, how many components are there in earth magnetic field? So if we will see, is the magnetic the north, so if earth is a magnet, so it would be like there is some north pole and south pole, and the magnetic field lines are going around it, huh? So this is and the magnetic field lines are going around it.
So is the north pole and south pole of this magnet are same as the north pole and south pole of Earth's geographic north-south? There is some geographic north-south also, no? At Arctic and Antarctic, है There is geographic north pole and geographic south pole. Are they same? The magnetic north and geographic north are same or different? And the answer is yes, they are different. They are not same, and they have been. It's like if this is the north pole, this is the geographic south pole. This is the magnetic north, and this is the magnetic south. So this is the magnetic north and south is a bit tilted from the geographic north. You have to remember, it is not exactly the geographic north and magnetic north are not same, but they are different and they are a little bit tilted. So this is geographic axis north south that is dividing Earth, and this is the magnetic axis of the Earth magnet. It means there is a magnet inside it. So there is a magnet, and the north pole of that magnet is this, and south pole of this magnet is this. And the field lines are coming from here to like this, from here to this side. So field lines are coming like this way, right? So this is magnetic north and this is magnetic south, and then this is geographic north and geographic south. Now, so if I cut this into two parts, so I will get a plane. If I cut this from here, from geographic meridian, so I will get a plane. This is part is geographic meridian, and if I cut again from this side, so I get two planes. These two planes are known as geographic meridian and magnetic meridian. Like this. These are magnetic meridian and geographic meridian. And the angle we will see. So just remember this for the time. Component of Earth's magnetic field. So there are three components of Earth's magnetic field. First is declination. Second is horizontal. And third is angle of depth divided by depth. So theta. What is theta? Declination. Declination is nothing. The angle that geographic meridian is making with magnetic meridian. If I cut out this plane from a like this. So this is one plane and this is another plane. I cut this part and I have taken it like this. So this will look like something. This part will look like something like this. So if this is geographic meridian and if this is geographic meridian and this is magnetic meridian. So the angle between geographic meridian and magnetic meridian is known as angle of known as declination, right? So this is angle, this is denoted by theta. Okay, and theta also varies. Theta is varying. Second is horizontal. Now, to see horizontal and angle of depth, they are closely related to each other. This is magnetic meridian. So, if I would like you to imagine such a situation in which now go to magnetic north. Just remember magnetic north and magnetic south. So this is magnetic north and this is magnetic south. So we went to magnetic north pole, and what we have done is, like suppose this is some needle, okay, a magnetic needle. So I haven't suspended it like this so that it could give me deflection. I have suspended this needle like this. So if there is any magnetic field around this, it will deflect like in field like this. And we know the deflection is like this. Say this side is north and this side is south. This is a magnetic needle. This is north, this is south. This is north, this is south. Head is north, right? So go to magnetic north. If we are in magnetic north right now, what will happen?
what will happen is, if we are in magnetic north, the field lines would be coming out from the magnetic north. Yeah, है ना? Magnetic field line would be coming outwards from the magnetic north, right? So it would be coming like this. So if this is magnetic north, magnetic field line would be like this, from north to south, है ना? So if I have suspended this here, so what will be the alignment of this magnet? This is north and this is north coming out, है ना? This is earth surface, means this is level, this is earth surface, ठीक है? Earth surface, so this is like horizontal, this is horizontal itself, ठीक है? So this is so not the from north pole the magnetic field lines are coming like this, like this. So the north pole will attract north pole? No, it repel north pole and south pole will align itself towards like this. If I could show you like this, so it will align like this. If this is magnet, this is north coming out. So this is north pole and magnetic field line are coming like this from north. So south will align itself towards like this, and magnetic needle will show it's north towards this position. So north, no. So the angle which is made from the horizontal, from north, the horizontal it makes is 90 degrees. This needle makes angle 90 degrees, है ना? Now at this pole the magnetic field line is coming like this, है ना? अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो ये तो एक छोटा सा पार्ट होगा, है ना? अर्थ तो बहुत बड़ी है ना? तो इसके लिए हमें तो ये क्या, हमें कर्व नहीं नजर आएगा, हमें तो कम से कम 8 किलोमीटर तक तो हमें फ्लैट ही नजर आती है. सो उसके बाद डिप शुरू होता है, ठीक है? सो तो हम जब यहाँ जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आते हुए नजर आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ट्स होंगी, नॉर्थ से आएंगी साउथ को जाएंगी. So at south pole, if you are standing in south pole, suppose अब south pole में आ गए, so in south, magnetic south में क्या होगा, the field lines will be coming in, and this will मान लो this is south, magnetic south, so field line is coming like this, है ना, towards the horizontal, these are coming like this. So what if I suspend this magnetic needle, how will it align itself? It will be aligning itself in this direction or this direction. It will align itself in, this is south and it is coming from north. So this is south will obviously south will attract north. Huh? So this will be like this. It will also align itself completely because the field line is like this word and the magnetic needle will be not like this, but like this. Huh? So they will align themselves like this. Huh? The magnetic field lines. Huh? So this is south and this is north. So in magnetic south, in magnetic south this will be like this, and north will like this side. So यहाँ पे भी the angle between the horizontal and this is known as 90 degrees, है ना? तो horizontal पे भी और यहाँ पे भी जो हम angle देखते हैं it is 90 degrees. Now come to poles, not equator, right? यहाँ पे भी 90 देखा हमने, अब pole पे आ जाते हैं, sorry equator पे आ जाते हैं. This is equator, this is equator. Now we come to equator, like at this point, है ना? At this point, देखो यहाँ तो horizontal से horizontal के पास कैसे आ रही फील्ड लाइन, ऐसे आ रही है ना? यहाँ पे भी horizontal के पास फील्ड लाइन कैसी आ रही है, ऐसी आ रही है. अब यहाँ देखो horizontal के साथ फील्ड लाइन कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, पैरेलल. यहाँ परपेंडिकुलर थी, देखो यहाँ क्या हो गया, this becomes parallel. What do that mean? It means that if you are now at equator, the field lines are going like this. Field lines are going like this. These are field lines now. And if I will suspend this magnet, will it align itself towards like this or this? No, it will not align itself towards like this. So if this is north and this is south, and we are at equator, so it will align itself like this is north, and this is south. So its north will align itself towards south. Its north will align itself. Its north will align itself towards south, and south is which direction? South is which direction? South is this side, and north is this side. So its south will go towards north. So it will not align itself like this, but like this in this magnetic.
and slowly if we start moving from here, then this will start deflecting. Here the angle between magnetic field and this is 0, है ना? So this 90 degree, this 0 degree is nothing but angle of dip, ठीक है? So this keeps on changing from 90 to 0 and 0 to 90 again, है ना? So अगर आप इधर से आप इधर पे देखोगे तो ये मैग्नेटिक नीडल अपना नॉर्थ है तो साउथ इधर अलाइन कर देगा, और ये साउथ है तो अपना नॉर्थ कंप्लीटली इधर अलाइन कर देगा। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आप यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ पोल, तो साउथ पोल की तरफ जाते रहोगे तो इसका ये जो नॉर्थ है ये कैसे अलाइन करेगा खुद को, अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है। तो कभी कभी क्या होता है, दिस मेक्स एन एंगल, सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ऐसे एंगल बना था, ठीक है? फिर ऐसे ऐसे चलते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर पीछे हो जाएगा, फिर ऐसे। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है, यहाँ देखो, यहाँ केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है ना? अर्थ के केवल और केवल हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे एंगल पे खड़ी हो गई हमारा जो मैग्नेटिक नीडल था, इट स्टैंड्स at an angle. So at this point we have one horizontal component and one vertical component. दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ केवल और केवल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है इसका, है ना? इसके तो हम कंपोनेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या कंपोनेंट होगा, ये तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसका क्या कंपोनेंट है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ सीधे 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है ना? तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है ना? सो इधर पे केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट बच गए, यहाँ पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया, और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ गए, है ना? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा, मान लो एक बी है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे बी है, तो उसके दो कंपोनेंट होता है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट होता है अर्थ के सरफेस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट कंपोनेंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? ठीक है, अगर मैं इसको मेरिडियन में शो करूं, मेरिडियन में मान लो ये है मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, B represents any point, है ना, at Earth's magnetic field. So if this is angle theta, delta, sorry, so del is angle of dip, है ना? Magnetic field, and this is horizontal, and this becomes vertical, ठीक है? So the component of Earth magnetic field, how we will define horizontal? Horizontal हमें पता है क्या है, ये जो horizontal है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल मींस जहां पे हम यहाँ पे इक्वेटर पे जाके देख रहे हैं, ठीक है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आ गया है ना, पूरा सरफेस के साथ मिलके चल रहा है। यहाँ पे देखो सरफेस से परपेंडिकुलर चल रहा है, तो ये जो सरफेस है ये बेसिकली कुछ नहीं है, यही हॉरिजॉन्टल है ना? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना? तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कैसे डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज डिप, ठीक है? डिप क्या होता है, डिप ये एंगल होता है, ठीक है? द एंगल बिटवीन resultant magnetic field and horizontal component of magnetic field, ना, is known as angle of dip. So this is angle of dip. Now हम कुछ calculations कर सकते हैं, calculations क्या कर सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? So horizontal क्या होता है, magnetic field का horizontal component is known as resultant magnetic field का horizontal component B in horizontal direction, और horizontal component is known as horizontal, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, एंड एंगल ऑफ डिप इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? अब देखो एंगल ऑफ डिप, ठीक है? अब एक काम करते हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैं इसके टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, ये H है और ये क्या है, ये B है ना, और ये भी हो जाएगा, तो मैं इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करता हूँ, तो ये भी V है, और यहाँ तक ये कितना है, H, है ना? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना? इसको कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस, इस ट्रायंगल में देखेंगे बिकम्स एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर,
ओके। एंड tan डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन देनी है, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नीट्यूड तो आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस, मैग्नेटिक प्लस 1 एंड नाउ tan delta is equals to P upon V, P is V and B is H, so it becomes V is nothing but V क्या है, V is equals to, अगर मैं इसको डेल बोलूंगा तो दिस इज B है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको ऐसे रखो, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स V अपॉन H, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज, लास्ट थिंग, तो डेल्टा की वैल्यू जो है एट पोल्स बताओ, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है पोल्स में जाते ही ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, देखो हॉरिजॉन्टल इज दिस है ना, और पोल्स में जाते ही हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाता है, नॉर्थ पोल में कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस मेक्स 90। और डेल्टा एट इक्वेटर में क्या करता है, ये अपने आप को इक्वेटर है तो मैग्नेटिक नीडल कैसे अपने आप को अलाइन कर देती है उसी के साथ, है ना, तो दिस इज पैरेलल, है ना, दीज आर पैरेलल, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आ जाता है, सो 0 डिग्रीज, है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।